Okay, Bismillahirrahmanirrahim. If you recall, in previous class we talked about past continuous tense. Any action that remains in progress in a specific time in the past. If a past ke payo khas time ke ukar rawan wi, no dage da bara mu past continuous tense istemal. Bya no se conditions hum munga discuss kilo shira ye ukar wushi o bal rawan wi, like when I entered the class, what was happening? Sakar rawan. Students were talking, they were discussing topics, they were revising the homework, they were writing homework, etc. So here, no, munga past continuous ai ki was and were helping verbs and ing form pa ke istemali ki. Next zamu sara chili aga past perfect tense the past perfect chili yo khudara chida munga far past ke pater liri zamane ke yo kar shawi we. If you remember, munga past simple hum karo aga chi usu se kar ushi, like for example, I told you about my students in my school there. So here agi bara ke ta samus khabar uplada past ki nizdi us la khabar ma complete ho होइगे या परun munga yo kar kadi bi aga nizdi us yo kar shawi bi. But when we refer to far past liri yo khabar ki shawi ho da kar flane kar shawi ho sahi da za flani se taliyum laram da past simple tense de taliyum da past perfect tense de होइगे कार में uliko da past simple de car में लिखले हो da past perfect de. No jikala munga khabara far taraf ta buzu ba past ke liri taraf ta buzu, no we use past perfect tense. Second condition that is when two action happens. दो कारणों उसी यो पहले उसी यो रुस्ता उसी. Like a typical example that is डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. That is a typical example दे और दा पिंजम क्लास न बता सुधरा पढ़ा उसी भी. ठीक है? नो कार पहले सब उसी मरीज मर चुका और रुस्ता डॉक्टर आ गए. या टीचर के आने से पहले स्टूडेंट्स जा चुके थे. नो उस द टीचर रात ले रुस्ते शेवी दे और स्टूडेंट्स पहले तली दी. नो जिकम कार पहले कंप्लीट हो we express it or we describe it in past perfect tense. लगा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, नो द मरीज पहले मर चुके that we describe in past perfect tense और डॉक्टर दूसरा वाले दिन आप past simple के डिस्कस करो. सही ना? होई क्या करना? नो हर आगा सिचुएशन चे भाई के दर्शन दो कारणों उसी यो कार पहले उसी यो रुस्तो उसी. नो दागे ना पारा हम we use past perfect tense. Structure is simple. We have only one helping verb, that is had, and third form of verb that is called past participle. And then rest of the sentence comes after patra typical sentence. Subject had, third form object, rest of the sentence. For example, earthquake had hit Pakistan in 2005 या 2005. तो इधर 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था. ला खबर उसमें फार तरफ तब बोला. कज़ावेम के 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला आया the past simple tense. Earthquake hit Pakistan in 2005. The past simple day. Earthquake had hit Pakistan in 2005. The खबर माले गले रे बोतला. अक्सर मुंगो ही करा. अगर आज सोक चाहता से अक्सर सत कई अच्छे हो करा. नो जैसे ज़ड़े वर्ते ही राधे वर्ते भी नो इधर माता का कोड दे. और जब राधे वर्ते ही तो मुखा बल तक की कोड देगा ना. नो खबर मार करा. चेकला मुंगा खबर निज़दे को निज़दे ले रहा बोली. We use past simple tense. और जे आ तरफ तक नो ब्यामुंगा सकू past perfect का इस्तेमाल होएगी. नो जिकला मुंग far लग गुंता कि past tense दिया का far तरफ तक बुझियो action दिया का लरे तरफ तक past की बुझो, then we use past perfect tense. Similarly, the patient had died. Now, the action चली दा पहले शब्द दे. Patient पहला शब्द दे. वफात शब्द दे, मर शब्द दे. सही ना? नो दा मुंगा past perfect दे explain को. और the doctor रातल चीज़ अगर रुस्ते शेविदी no before the doctor came. दामु को बले तरीक़ा में विलिशु before the arrival of doctor. सही ना? मुख्तलिफ तरीक़े की दिशी. वो suppose मादे तरीक़ा मादे भी को past simple tense second form of verb में इस्तेमाल. होएगे? Yeah. I had done a made before am fill. मादल ते क्लिकली when an action happens before another action, another event or a specific time in the past. यो कार दबल नमक की उसी लगा फॉर एग्जांपल ता सुविले छे द दिसंबर नमक की मुंह फलाने कार कळे सही ना या द मैट्रिक नमक की चीज नमा फलाने डिप्लोमा कळे या में फलाने कोर्स कळे या फलाने क्लास में अगस्त नो द मैट्रिक चीज रुस्त शेविले द नमक के तास यो कार कळे दा यो इवेंट दे सपोज न पोएगे लगा ता सुविले छे मुंगा मैट्रिक कळे 2015 नमक की मैट्रिक कळे वो होएगी. So I had done matric before 2015. होएगी क्या ना? मतलब देखिए मैं वही चीज़ the MPhil लम्हा के MAT कड़े हो. So I had done MAT before MPhil. मैंने MPhil से पहले MAT किया था. We had discussed parts of speech before tenses. Tenses से पहले हमने parts of speech पढ़े थे. होएगी क्या ना?
और अली हैड डन मैट्रिक बिफोर 2015. 2015 से पहले अली ने क्या किया था? मैट्रिक किया हुआ था. Clear the? Now when we change it into negative, the negative the para structure manually is simple. Introduce not after head and you have negative. The head na pas not lege वैसा दूसरा negative structure जोड़ेगी. Like for example, earthquake had not hit Pakistan in 2005. सही ना? Yeah, the patient had not died before the doctor arrived. The students had not left the class before the teacher came. टीचर के आने से पहले स्टूडेंट्स नहीं गए थे. The students had not left the class. Leave, left, left. तो ये क्या? No, but the command the head na pas not we have negative structure. Now, yes, no questions about we bring helping verb to the start of the sentence. Sir, helping verb the fiqre start tarawle और आखिर के question mark बोलेगा वैसा दूसरा yes no question जोड़ दो. Like for example, had you learned tenses in primary school? क्या आपने primary school में tenses पढ़े थे या सीखे थे? Yes, we had. No, we had not. जवाब बाबा yes, we had. No, we had not. पढ़े structures रहो को. होएगा? Yeah. Had we discussed parts of speech before tenses? क्या हमने tenses से पहले parts of speech पढ़े थे? Yes, we had. No, we had not. पढ़े थे? Yes, we had. नहीं पढ़े थे? No, we had not. होएगा क्या ना? Can you ask me a few questions? माने तपोस कोई नहीं है बदले. Yes, no questions. Yes. If you ask me कि सर जब आप मैट्रिक में थे तो आपने लैंग्वेज सीखी थी या आपने टेंसेस या ग्रामर सीखा था? यस, कैन यू आस्क मी? Had you learned grammar when you were in metric या when you were in metric या before metric या whatever? सही ना? जब आप मैट्रिक में थे तो क्या आपने ग्रामर सीखा था? Had you learned grammar when you were in metric? Word चीज़ आप पास simple tense देखा ना? Yes, sir. देखा ना? Second form of verb, the linking verb दे माता साबल उसके लिए चिल्ला for example, I am present, I was present. No, I am present. The present the para I am first form of verb इस्तेमाल शो. I was present yesterday. No, was the मास्टर second form of verb. the तेर हालत माता है. No, when you were in metric, sta existence मौजूदगी है. सही ना? No, had you learned tenses या grammar when you were in metric या when you were in at this level? कल इस पत्ते level माने तावे न तारा सिजुनस दकड़ू. तासो माने दा तपोस कॉलेज है. No, I had not. जमा जवाब बस सही. No, I had not. नहीं मैंने नहीं सीखे थे. होएगी? I had learned tenses या English grammar when I was in second year. Suppose जब मैं second year में था तो मैंने ये चीजें सीखी थी. होएगा? हाँ. WH question the para. We introduced WH words. Then head, subject, third form, rest of the sentence question mark. For example, what had you studied in primary schools? Primary school में आपने क्या पढ़ा था? क्या सीखा था? सही है? और when had you taken language classes? आपने language classes कब ली थी? कहाँ पे ली थी? Where had you taken language classes? Where had you learned these things? That's you know ताकम से किस दकड़ू? होएगी? न बदे तरह कमाने we make WH questions. सही ना? बाकी अगर head you not अगर इंट्रा नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रागेटिव से तुम्हारा significant structure न देना टेंस तुम्हारा ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होगी. हाँ बदे वजह से ज़्यादा focus दिलाना वर्क. So I hope it's clear to you. Clear then? So had you gone Karachi before 2015? Sorry? Had you gone Karachi before? No, I had not. No, I had not. Had you visited Karachi before 2015? क्या आपने 2015 से पहले कराची का विजिट किया था? No, I had not. सही ना? Clear then? Yes, sir. Okay, you may write it, Shabash.